सो गाइज आई एम बैक विद अ बैंगर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंडिया में तो फास्ट फूड की हालत कितनी खराब है, हम सबको पता ही है। और ये अंग्रेज भी कोई कमी नहीं छोड़ते दिखाने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अमेरिका में भी हालत कोई अच्छी नहीं है, बल्कि अमेरिका में तो रेट भी इतना ज्यादा है फास्ट फूड का, लेकिन तब भी इनको अच्छी It's क्वालिटी नहीं often मिलती है। chemically treated to stay crisp for weeks. The pickles and sauces are packed with preservatives and stabilizers so they can sit in storage for months without changing color. Ever notice how your fries ओ भाई, 2012 से रखा हुआ है इस बंदे ने इसको शोकेस में दिखाने के लिए कि ये फूड फ्राइज जो है वैसे के वैसे ही हैं, खराब ही नहीं हुए। मतलब खाने के लिए तो खराब हो never जाएंगे, seem to लेकिन दिखने में rot? देखो That's because they're coated in dimethyl polysilicone वैसे के वैसे ही हैं 2012 के फ्राइज। and fried in hydrogenated oils that keep them looking fresh long after they should have gone bad. You are not going to believe what I found. This is a hamburger from 2010. I'm cleaning out my grandmother's house, and she has this. For real. I used to hear about it, but I never really saw it in real life. But here we are. Oh my God. इंडिया में भी बन ऐसे ही लगता है एकदम। अगर हम जब खाते हैं इस पर्टिकुलर जाके फास्ट फूड ब्रांच में, तो फूड ऐसे ही लगता है दिखने में भी। लेकिन ये 2010 का है, तो ये बिल्कुल मतलब रॉट भी नहीं हुआ है, ना कुछ फंगस लगा है। वैसे जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर देता है खा पी के। लेकिन 2010 का बर्गर रखा है और बैक्टीरिया ने तो छुआ भी नहीं है। तो अगर जर्म्स ही नहीं खाना चाह रहे हैं तो हम कैसे खा सकते हैं इस चीज़ को? मेरे को ये समझ नहीं आता है। तो क्या हमारे लिए सेफ है इसे खाना? लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है ही। 2010. Look at this. Oh my God. Fast food chains love to market 100% real, fresh, and natural, but most of what you're eating is chemistry disguised as comfort food. If you think the decline in quality and taste is bad, कैसा झाग आ गया यार तुरंत ही, जैसे किसी केमिकल में डुबा के बनाया होगा इसे। wait until you see how much they're charging now. This video compares the prices of meals at McDonald's in 2014 compared to 2024 due to inflation. To start it off, we have the McChicken sandwich, which is up 199%. The McDouble sandwich is up 168%, and though it doesn't seem like that much of a jump, they're just going to continue selling us the same food at a higher price. French fries are up 130. मेरे को भी याद है जो मैक बर्गर सबसे जो सस्ता वाला आता था 2012 के आसपास, 30-35 ऐसे कुछ रुपए का एक आता था, 35। हाँ, अब वो भी कम से कम कितने का हो गया है? 59-60 के आसपास शायद हो गया है अप्रोक्सीमेटली। 38%, meaning that French fries are almost the price of a chicken sandwich. How does that make any sense? The quarter pounder with cheese is up 122%, from $5.39 to $11.99. That's a pretty massive jump if you ask me. The Oreo McFlurry is only up 88%, from $2.39 to $4.49, but a 10-piece chicken McNugget meal is up 83%. From $5.99 to $10.99. So for some of these meals, it costs the same for an hour's work at minimum wage. Here's a classic combo 10 साल में प्राइस डबल हो गया है। versus लेकिन the देखा latest जा रहा है कि क्वालिटी में कमी हो गई है, बल्कि और पोर्शन साइज भी छोटा हो गया है अमेरिका में। same burger plus fries plus drink, but now it's almost double the price. I just think it's kind of funny that the price of the fancy steak dinner on regular menus at regular restaurants used to be like $14.95 or $15.95, and you'd be like, oh my God. And you're like, nobody hardly ever orders that. Now today, that's just the price of fast food. I mean, what the fuck? Name any fast food chain you can think of, and it's nearly guaranteed they've raised their prices recently. Fast food prices haven't just risen, they've outpaced inflation in many categories. You're paying more for less. They've shrunk the burgers. This burger looks so tiny. Those footlongs may not measure up anymore. I bet you a man was working on Subway right now, because does this look 12 inches to you? The fry size is cut. Are you kidding me? I paid $2.99. क्योंकि जब इनने अमेरिका में स्टार्ट किया था तो इनके बर्गर्स काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब तो ये इंडिया के बर्गर को भी बीट कर रहे हैं।
साइज for में। this. $2.99. Show the bag. Do you see that? No fries in the bag. $2.99. Shrinkflation is real. Price stays high, quantity drops. Chains responded by layering in the premium versions. But those cost even more and often aren't better. Let us know in the comments if there's any premium fast food item you feel is actually worth it. Now for the gross factor. Brace yourself. We've all heard rumors. Now let's look at documented disturbing facts. This is what ओ y'all been फंगस लगी हुई है भाई, फंगस लगी हुई है। eating off of. Look at this shit. Look at this shit. Cause they don't know how to clean their shit properly. Wendy's them right in there. क्योंकि ये देखा जाए तो एक फैक्ट्री के आउटलेट की तरह ही है, क्योंकि इनका सामान इतनी पेज से बिकता है। Damn video. The hell of them not. That piss me off. Employees have posted images, questionable sanitation, reused items, weird antics. Stories go viral every year. And even ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो जोक होगा मेरे ख्याल से। if a single post is a prank, the pattern is unsettling. One audit found that Wendy's locations in बे। Chicago had a 20-point देख लो भाई, अंग्रेजों देख लो क्या कहते हैं ये लोग। ये क्या है, कॉकरोच भाई, अमेरिका में। 4% failure rate of inspections. That means 1 in 5 stores Abbe failed yaar. basic sanitary checks. People entrust these kitchens with food. The real reason McDonald's ice cream machines are always broken, it's not just ओ bad luck. भाई मैगेट्स, It's built up Fly की growth larva and ये। mold inside machines that rarely get deep cleaned. The cleaning cycle takes hours, so workers often skip it or shut the देख लो machine भाई, वहां भी हाल कोई अच्छे नहीं है, सब कहने की बात है। down instead. In some locations, techs have even found slimy residue and spoiled mix clogging the system, making out of order the safer option. When I was in the kitchen cooking, my boss, not my district manager, the boss above him called our store and see if I was working. He had a little project for me to go do. I was to go across the street to McDonald's to show McDonald's how to clean their machine. Mind you, this is through lunch. McDonald's is packed. So I went over there. They'd never seen a machine torn down. Well, there's a whole bunch of people behind me, behind the counter, customers. This is true, क्या लिखा हुआ है? This is true. I worked for a year and I did not see anyone clean the ice cream machine. और तभी तो कितने कीड़े लगे हुए हैं उसमें। People behind me, behind the counter, customers. I'm standing on a stool so I could get to the top of the machine. When I finally break the cylinder और कोई बीमार पड़ भी गया तो क्या बोलेंगे, ये तुम तो फास्ट फूड खा रहे हो, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीमार तो पड़ना ही है। loose, I worked at McDonald's. Only thing we did to clean the ice cream machine was wipe it down. भाई उसको कम से कम एक हाई प्रेशर वाटर से क्लीन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, जितना उसमें फंसा हुआ है before ना to start pouring in a कूड़ा। 5-gallon bucket. What do you think came out of that machine? Besides ice बायो cream. हैजार्ड थी वो तो मशीन भाई, उसमें तो खाना बनना ही नहीं चाहिए। आइसक्रीम Worms, maggots. They never clean the machine. So if you want to go to McDonald's and get you some ice cream or get you a Frappuccino, go right ahead because I'm not eating that. In a 2024 E. coli outbreak, CDC now reporting at least 75 people have been sickened after eating quarter pounders from McDonald's. McDonald's slivered onions used on quarter pounders in 14 U.S. states were contaminated. Over 100 people got sick, 34 hospitalized, 1 person died. Oh, Think my. your soda is safe? Studies have found bacteria from fecal matter on soda fountain, nozzles, and ice machines, often because they're rarely cleaned properly. Behind the scenes, most of these kitchens run on भाई इनकी भी हालत काफी खराब है यार, अमेरिका में भी। speed, not sanitation. When the line's backed up, nobody's stopping to deep clean the भाई ये कितना गंदा हो रखा है। fryer drain or swap out the sanitizer bucket. As gross as it seems, people keep paying. Why? Next, the और psychology मेरे को क्वालिटी तो इंडिया की जैसी लग रही है इनके खाने की, मतलब वैसे behind the ये बोला जाता है कि यूरोप में, अमेरिका में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है बाकी सारे फास्ट फूड चेन्स की, लेकिन इनकी भी बेकार ही लग रही है मेरे को। addiction, the इंडिया जैसी dopamine लग रही है। trap.
Fast food is engineered to trigger your reward centers. Salt, sugar, fat, texture, they're inputs in a formula. Scarcity and hype are baked in. When something is limited time or viral, you feel you must try it. Creators fuel the hype. Every viral वही इतना सॉल्ट और चीज और फैट उसमें होता है कि वो डिलीशियस लगता है. तुम्हारे जो सेंटर्स होते हैं ना ब्रेन में, हंगर सेंटर होता है, ठीक है, वो ट्रिगर होता है, डोपामिन रिलीज होता है, तो तुम्हें और मन करता है खाने का. बस वो एक तरह से ना केमिस्ट्री लैब में फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एक तरह से जोड़ के तुम्हें दे दिया गया है. और वो एक तरह से कुक तो होता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको ये जाके असेंबल करते हैं अपने क्या कहते हैं फ्रेंचाइजीज में, असेंबल करके तुमको दे देते हैं. देखा जाए तो review is free marketing for chains. This will change your life. Viral KFC bowl trend. Let's try another viral Sonic drink. Trying every taco at Taco Bell. Let's try Wendy's new Fuego meal. Viral Chick-fil-A sandwich. Let's try. और ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इनको और भी ज़्यादा पॉपुलर कर देते हैं. इनको फ्री में मील्स मिलती रहती हैं. chicken meals. So, with quality down, prices up, and grossness creeping in, is this just inevitable? If it's engineered to hook you and to make more per order, are you really choosing it? गलती तो हमारी है ना. सरकार तो ये बोलती है भाई तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम तो अडल्ट हो, तुम तो डिसीजन ले सकते हो, तो फिर तुम लोग क्यों ले रहे हो. लेकिन एडवर्टाइजमेंट इस तरह से टारगेट करती है लोगों को, बच ही नहीं पाते हैं. I stopped eating fast food in early September 2023. Here's some of the effects that I I've gave up noticed, fast food. as well as some of the reasons that I made the decision to stop eating fast food. Reason number one was cost savings. Fast food, in my opinion, has gotten ridiculously expensive. With Wendy's talking about going to a surge pricing model and stuff like that, it's even more ridiculous. मतलब जब अमेरिका में लॉन्च हुआ था तो ये वर्किंग पीपल जो थे नॉर्मल, ठीक है, उनका फूड था एक तरह से देखा जाए तो. लेकिन इसलिए काफ़ी सस्ता था. $3 में पूरा, $4-5 में पूरी मील आ जा रही थी. लेकिन अब देखा जाए तो $15-20 तक चली जाती है एक नॉर्मल छोटी मील भी, बर्गर फ्राइज के साथ. Reason number two, my health. I saw tons of videos of Chick-fil-A, McDonald's, and other companies putting tons of things that basically make us more addicted to the food and make it harder to not eat there. I just decided I didn't want to put that in my body anymore. As an alternative, I decided that I would rather have good fruit, vegetables, organic, healthy, grass-fed, all the best food that I can possibly put in my body. Really thinking of my body as a car that needs premium fuel and not just regular fuel. और क्या मतलब, ग्रोसरी शॉप में जाओ, थोड़ी मेहनत करो, फूड को पिक करो खुद से, ठीक है, अच्छे अच्छे अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढो, घर में खुद बनाओ ना. तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो फास्ट फूड तो तब भी महंगा नहीं पड़ता है. इंडिया में तो काफ़ी सस्ता पड़ता है घर का बना हुआ खाना, लेकिन अमेरिका की बात अलग है. लेकिन इनकी भी हालत काफ़ी ख़राब है भाई. Because I have to make this one car my body last an entire lifetime. I put bad fuel into it long enough, so I'm cutting it out for the rest of my life. Okay, let's get to some of the effects. My skin is way clearer than it has been. I feel healthier than I've ever been. Mentally and physically, just a lot healthier. Very good, very good. My wallet has saved a lot. I was right, fast food is ridiculously expensive, and when I eat in more, I save a lot of money. I plan on only quitting fast food for 1 month as a personal experiment, but I honestly don't think I'll ever eat it again for my entire life. Especially when many local restaurants are actually cheaper with tip now. We vote with our dollar in this country, and I've voted with my dollar and my body. Enough horror stories. Here's how you can fight back. First, cook at home. Even a DIY burger beats mystery meat slurry. Support local spots where they actually care about what goes into your meal. Stay in. तभी तो मैं लोकल स्पॉट जो होते हैं इंडिया में वहाँ पे ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि खाना जो होता है वो अच्छा होता है. मैंने तो ये देखा है. Follow recalls. Read food safety. देख के लगता भी है कि उन्होंने खुद बनाया है. ऐसा नहीं है कि किचन में जाके किसी ने असेंबल कर दिया अलग अलग चीज़ों को और फिर मुझको पकड़ा दिया है. Alerts. Knowledge is your secret sauce. Your stomach, your rules. Don't let the fast food industry win. You don't have to opt out entirely. Small choices shift culture. People are pushing back. There's a counterculture of flavor, honesty, and ingredient pride rising. Here's what I want you to think. Are we victims of smart marketing or complicit consumers who forgot what good food is? Which side are you on? Comment. Which fast food do you secretly defend? If this video... कमेंट करो तुम कौन से फास्ट फूड को खाते हो, कौन से फास्ट फूड को डिफेंड करते हो, ठीक है. आई विल रिप्लाई टू एवरीवन.